गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 140 एक्सपर्ट्स और डिग्निटरीज ने एक ओपन लेटर लिखी है आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट में, जिसमें कहा है कि नेशनल लेवल पर और मल्टीलैटरल लेवल पर हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जब ये री एंट्री कर लेती है अर्थ में अनकंट्रोल्ड लेवल पे, तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। तो अब ये जो है लेटर लिखी गई है, इसमें कहा है कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट आना चाहिए, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना खासकर जो है, उनके जो रॉकेट्स हैं वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली एंटर करते हैं। बहुत सी जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की है उन्होंने। इवन सी में भी जो है, इंडियन ओशन रीजन में खासकर जब मालदीव्स आर्कीपेलागो में भी जो है ये इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया है। तो इसके लिए ही कहा जा रहा है कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन करने की ज़रूरत है। तो इसमें कहा गया है कि लगभग 10% जो है वो ऐसे जो है आपकी सैटेलाइट्स होंगी जो अगले डेकेड में जो है वो अनकंट्रोल्ड जो है वो एंट्री लेंगी। तो इसीलिए खासकर जो है ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, हमने देखा ना कि इंडियन ओशन रीजन के जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली इनसे जो है टारगेट हो रही हैं। तो इसलिए इनको बचाने की ज़रूरत है, और जो है इसीलिए इनके ऊपर हायर रिस्क है। यहाँ पर लोगों की भी जो है डिस्ट्रक्शन की जो है वो एक तरह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट साइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो है स्टेट्स रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, उनकी जो स्पेस एजेंसीज हैं रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। तो अनकंट्रोल्ड री-एंट्री में क्या होता है कि रॉकेट स्टेज, आपको पता है ना कि जब भी कोई रॉकेट स्टेज जो है वो लॉन्च किया जाता है, तो उसके एक-एक करके स्टेजेस जो हैं वो उसको वो अर्थ पे छोड़ता रहता है, ठीक है? तो एक-एक स्टेज जो है वो सिंपली अर्थ पे फॉल होती रहती है। लेकिन जो है ये डिसइंटीग्रेशन कई बार क्या होता है कि इकट्ठी भी हो जाती है। मतलब जो एक-एक करके उसको फॉल होना था अर्थ पे, जो कि प्लान्ड होता है। अगर आप जब भी कोई और रॉकेट को छोड़ते हैं, तो हम इस तरह से प्लान करते हैं कि जब वो इस ऑर्बिट में आएगा तो वो एक एक स्टेज को पीछे छोड़ देगा, ताकि नुकसान ना हो अर्थ पे, ठीक है? लेकिन जब वो एक ही बारी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स फिर वो अनप्लान्ड एक तरह से री एंट्री लेता है और वो अर्थ पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो अभी जैसे चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है, अभी हमने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा भी था कि उसने अनकंट्रोल्ड री एंट्री ली थी और बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट की थी। इवन इसरो की भी रिसैट 2 सैटेलाइट जो है अक्टूबर 2022 में उसने अनकंट्रोल्ड री एंट्री ली और इंडियन ओशन रीजन में जकार्ता के पास जो है वो गिरी थी आकर। अब इससे डेंजर्स बहुत हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं। अगर अनकंट्रोल लेवल पर वो गिर रही हैं, तो ये कोई पता नहीं है कि कहाँ पर जाके गिरेंगी, है ना? सो इसलिए ऑफ कोर्स उससे कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं। अगर उस स्टेज में जो वो नीचे गिर रहा है हमारे अर्थ पे, उसमें फ्यूल बचा हुआ है अगर फिर भी, तो टेरेस्ट्रियल केमिकल कंटामिनेशन भी हो सकता है ना? तो अभी ग्लोबल लेवल पर कोई भी इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कंट्रीज़ को डैमेज पे करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन प्रिवेंट करना उस डैमेज को, उसके ऊपर ये जो है कन्वेंशन साइलेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, शेयर बायबैक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने जो है कहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक किए जाते हैं शेयर्स कंपनीज द्वारा, उसको धीरे धीरे फेज आउट करना ज़रूरी है। तो जो आपको पता है शेयर बायबैक क्या होता है, समझ लो एक कंपनी ने जो है 100 शेयर्स जो है वो इशू किए हुए हैं, तो 100 शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। तो एक तरह से 100 लोगों के पास इक्वल ओनरशिप है उस कंपनी की, है ना? सो समझ लो 100 जो है वो जो 100 शेयर्स हैं, फिर कंपनी क्या चाहेगी कि हम इस ओनरशिप को कम करें, तो वो उसके लिए क्या करते हैं कि वो 100 में से समझ लो 25 शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं, मतलब सिर्फ 75, ताकि वो 25 जो जो लोग जो जिनके पास शेयर हैं, 25 लोग, उनसे वो शेयर खरीद लेती है कंपनी उनको पैसा देकर। एक तरह से ओनरशिप जो है वो 25 लोगों की कम हो जाती है। फिर सिर्फ 75 लोग जो हैं वो ओनर्स रह जाते हैं, है ना? मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बट यही एक तरह से समझाने का एक तरीका है। तो अब सिर्फ 70 कंपनी अपनी ओनरशिप को जो है वो कम करने के लिए, अपने हाथ में ज़्यादा रखने के लिए, पब्लिक ओनरशिप कम करने के लिए जो है शेयर बायबैक करती है। इसको शेयर रीपर्चेज भी कहते हैं। तो एक जब जब स्टॉक एक्सचेंज से जो ऐसा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बायबैक, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि एक और मेथड है, मतलब टेंडर निकालती है कंपनी की, जिसके पास भी शेयर होल्डर्स के पास जिनके पास शेयर हैं और वो शेयर बेचना चाहते हैं, तो वो ओपन मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं अपने शेयर को बेचने के लिए। तो इसकी जो है मैक्सिमम लिमिट जो है
25% या फिर उससे कम ही रखी जाती है। और उसके जब जो है शेयर बायबैक के जो ये 2 राउट हैं, रादर बहुत सारे राउट होते हैं, बट ये टेंडर राउट और स्टॉक एक्सचेंज राउट बहुत फेमस है। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है, उससे जब कंपनी बायबैक करती है, तो उसका जो है कुछ जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक तो पहले कि जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं, वो आपके उसमें प्रमोटर्स, पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ कंपनी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्हें पहले ही पता होता है ना कि कब कंपनी जो है वो ऐसा मूव करने वाली है। प्रमोटर्स को ये पहले ही पता होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में, समझ लो अगले साल के कुछ कौन से वीक में जो है कंपनी जो है शेयर बाय बैक करेगी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से। तो इससे क्या होता है कि डिसप्रपोर्शनेट कुछ लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर समझ लो मैं प्रमोटर हूँ, मेरे कुछ जो है रिलेटिव्स के पास इसके शेयर हैं, और मुझे लगता है कि कंपनी जो है हायर रेट पर जो है वो परचेज करने वाली है आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स मैं उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ, है ना? सो इस कंटेक्स्ट में टेंडर राउट जो है वो सेबी ने कहा है कि वो बेटर रहता है। इसमें क्या होता है, टेंडर राउट जब निकाला जाता है, तो टेंडर राउट में जो है वो कंडीशन रखी जाती है कि जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं उनसे भी कुछ शेयर्स लिए जाएंगे, उनको एक तरह से इसमें रिजर्वेशन मिल जाती है, ठीक है? सो इसलिए जो है ये इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर रखा जाता है। तो इसीलिए जो सेबी कह रहा है कि हम इस प्रोसेस को पूरा डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। किसी के पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, जो पहले से ही होती है जैसे प्रोमोटर्स के पास, उसका वो बेनिफिट ना ले सकें, ठीक है? सो इसीलिए सेबी जो है वो इस जो है स्टॉक एक्सचेंज से जो फेज आउट है उसको जो है वो बाय 2025 इसको जो है फेज आउट करना चाहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वन रैंक वन पेंशन गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो वन रैंक वन पेंशन है वो अब 2019 की कट ऑफ डेट से लागू होगा। तो जब आपको पता होगा कि जो है आपके जो जो भी रिटायर हुए हैं कैलेंडर ईयर 2018 में, उस समय जो पेंशन होती थी जिस भी रैंक के हिसाब से, उसी को ही जो है वो रीफिक्स किया गया, और सब चाहे कोई 1980 में भी रिटायर हुआ होगा तो उसको जो है 2018 की पेंशन के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब ये वन रैंक वन पेंशन क्या है, जब 2014 में स्कीम लाई गई थी तो 2013 को जो है कैलेंडर ईयर जो है वो माना गया था, और ये कहा गया था कि एक्स सर्विसमैन को जो है पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो भी 2013 में जो भी रिकमेंड जो भी पेंशन चल रही थी जिस भी रैंक के पर्सन को, वो ही पेंशन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन कब रिटायर हुआ है, ठीक है? लेकिन इसमें ये भी क्लॉज डाला गया कि हर 5 साल बाद जो है वो रीफिक्सेशन की जाएगी पेंशन की। तो ऑफकोर्स 2013 के बाद 5 साल जो है वो 2018 आता है, तो 2018 को ही जो है वो अब चूज़ किया गया है। अब ये जो आपका वन रैंक वन पेंशन है, ये भगत सिंह कोश्यारी जो अभी करंटली महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उस टाइम पर वो एक एमपी होते थे, तो उनकी जो है कमेटी के अंडर जो है ये वन रैंक वन पेंशन जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम को जो है वो अप्रूवल दे दिया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स में। तो अब आपको याद होगा कि डब्ल्यूटीओ में केस चल रहा है कि जो है आपके जो है यूएस ने जो है कुछ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट से जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हैं। बेसिकली वो चाइना का जो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स उसको वो नहीं लेना चाहते हैं। तो एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि इंडिया एक इकोसिस्टम बनाए कि चाइना का जो है सोलर पीवी का मॉड्यूल्स है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाए। उसके लिए ही ये स्कीम को में पीएलआई बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जीज़ को जो है वो इंप्लीमेंट करने वाली है। 19,500 करोड़ रुपए के जो है वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगले 5 साल में। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, कंट्री की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर रीन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स में खासकर, वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गृह इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूआईडीएआई जो है उनके हेडक्वार्टर को गृह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि वो सोलर पावर को बहुत अच्छे से हार्नेस कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं अपने वाटर को, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में, ठीक है? इसलिए उनको गृह जो है इनिशिएटिव के अंडर अवार्ड दिया गया है। गृह इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये एक तरह से नेशनल रेटिंग सिस्टम है इंडिया का, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसके लिए। इसको टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो जॉइंटली सेटअप किया था, और ये ग्रीन बिल्डिंग्स के डिज़ाइन में हेल्प करता है और देखता है कि कितनी जो है बिल्डिंग जो है वो उसकी ग्रीननेस कितनी है। तो कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करते हुए रेटिंग दी जाती है, तो उसके लिए यूआईडीएआई का जो है वो बहुत ही अच्छा माना गया है इस साल। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ट्यूलिप आपके
जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने बताया है कि 5000 इंटर्नशिप्स जो हैं वो ऑफ़र की गई हैं ट्यूलिप के अंडर जो है इस साल। और ट्यूलिप क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है फ्रेश ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में जो है वो काम करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मिलकर जो है ये इंटर्नशिप्स देते हैं और 8 हफ्तों से लेकर 1 साल तक की ये इंटर्नशिप हो सकती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो लोगों जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग बाय जो है डूइंग, मतलब एक तरह से उनको अप्रेंटिसशिप मिल जाती है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस होती है क्योंकि वो फील्ड लेवल पर काम करते हैं तो उनके जो है स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, आपको जो है जो ट्यूलिप इंटर्न्स होते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है लार्ज नंबर ऑफ एरियाज़ में काम करने का। इससे जो है आपके न्यू ब्लड भी जो है आप कह सकते हो न्यू यूथ जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस में आता है तो गवर्नेंस भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है? तो स्किल्ड हाई क्वालिटी वर्कफोर्स, इनोवेटिव सिटीजन सेंट्रिक सॉल्यूशंस जो है वो आपके अर्बन गवर्नेंस में देने के लिए हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेल बॉट्स। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक जो है वो सॉफ्ट रोबोट बनाया है जिसका नाम है जेल बॉट। जेल बॉट क्यों है? क्योंकि इसका जेलेटिन का यूज़ करते हुए, जिसके आपके कैप्सूल्स भी बनते हैं, आपको देखा होगा है ना, जेल जैसे से होते हैं वो। तो जेलेटिन का जो है वो यूज़ करते हुए इस रोबोट को बनाया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई एक्स्ट्रा पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी शेप ही ऐसे होगी कि इसको किसी भी तरह से जो है वो मूव किया जा सकेगा। तो एक तरह से जेल बेस्ड इसकी शेप होगी। तो इसको जो है ये आपके टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए ये जेल जो है वो स्वेल करेगा या फिर श्रिंक करेगा, उसी के बेसिस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको हम रिमूव कर पाएंगे। अब इसके यूज़ क्या होंगे? स्मार्ट स्ट्रक्चर्स बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। टारगेटेड मेडिसिन देना ह्यूमन बॉडी में, उस लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। इसको मरीन रोबोट्स भी बनाया जा सकता है और पेट्रोलिंग करना, ओशन के सरफेस की मॉनिटर करना जो है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब जब समझ लो कोई भी ह्यूमन बायोमार्कर या फिर ये बायोकेमिकल्स जो है उसके रिस्पॉन्स में भी इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट। ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट जो है वो एक हाई लेवल पॉलिसी कमीशन जो है गेटिंग एशिया टू नेट ज़ीरो द्वारा बनाया गया है। ये आपके एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो न्यूयॉर्क बेस्ड थिंक टैंक है उन्होंने इसको बनाया है और इसमें न्यू रिसर्च और मॉडलिंग दी गई है कि कैसे, और रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि कैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं इंडिया, ठीक है? ये पहली रिपोर्ट है इस कमीशन की। इसमें कहा गया है कि कोल को एज सून एज पॉसिबल बाय 2023 को हम एंड करें अगर, और कोल पावर को जो है हम 2040 तक जो है वो हम एक तरह से ट्रांजिशन कर लें उससे, तो इंडिया जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन जल्दी कर सकेगा। अगर 2050 तक जो है इंडिया नेट ज़ीरो एमिशन कर लेता है तो इंडिया अपने जीडीपी को 7.3% तक बूस्ट दे सकेगा। नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक करने से इकोनॉमी वाइड इन्वेस्टमेंट $10.1 ट्रिलियन की जो है वो हो सकेगी। 2050 तक अगर करते हैं तो हम 13.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने एक कमेटी बनाई है कि एक्सपर्ट ओपिनियन मिले कि यूजीसी ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी हैं कि फैकल्टी को ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, उसके बारे में एक तरह से एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो चाहता है केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है एक इनोवेटिव सेल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है और हमारे रिच हेरिटेज है, जो कल्चर है, आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर, एग्रीकल्चर, बेसिक साइंस, जो भी हमारा मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नॉट जस्ट मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन तक ही नहीं सीमित नहीं है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, उसको कैसे जो है हम स्प्रेड कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो ये बनाया गया है, ठीक है? अब IKS डिवीजन जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसके फंक्शन क्या है? तो आपके रिसर्च करना, ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्क को देखना, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को देखना कि कैसे आपस में जो है ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, एस्टैब्लिश करना ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप्स को, पॉपुलराइज करना इसको, फंडिंग फैसिलिटेट करना या फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी देना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फार्मर्स डे। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल फार्मर्स डे जो है 23 दिसंबर को जो है हर साल मनाया जाता है और टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी। 2001 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये किसान दिवस जो है वो मनाया जाएगा और अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो ड्राइव्स चलाए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री ऑन दिस वेरी डे, ठीक है? सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is uncontrolled re-entry of satellites. So this topic is important for your science and tech section. So more than 140 experts and dignitaries have signed an open letter and the Outer Space Institute that we should have at least national and international efforts or multilateral efforts to restrict uncontrolled re-entries of satellites into Earth orbits. Okay, so why this is necessary, why this letter has been written? Because you know that recently certain satellites or certain space objects which were launched by China made uncontrolled exit into the Earth, and it created destruction on Earth. Okay, so currently there is no such multilateral arrangement whereby we can hold China accountable for all this irresponsible behavior. So that's why these experts have written the letter, and they have said that in the next 1 decade, almost 10% casualty risk is there if these uncontrolled re-entry of satellites happen again, and countries in the global south face a higher risk than other countries, because you may have seen that when China launched these satellites, these when they made uncontrolled re-entry, most of them targeted the Indian Ocean region and the island states, particularly the Maldives archipelago, even Indonesia, small islands of Indonesia, and also that of the Australia, near the islands near Australia. They were more vulnerable to the damage that could be caused by these re-entry vehicles. So uncontrolled and re-entry happens because you know that whenever any rocket is launched, then there are stages. After every stage that the rocket stage, after every rocket stage gets completes its task, then that part of the rocket is disassociated from the rocket and it falls on the ground. But when it is planned, when it is a planned disassociation from the rocket, it falls only in the ocean. Okay, and it is done to minimize the damage, and no such material is used that whenever you know when ISRO is doing it, they know that this particular part of the rocket would fall after reaching a certain distance, and when it falls on the ground, it does not create maximum damage, or it is placed in such a way that whenever it falls on the ground, it would not create any damage or to the ecosystem. But there is a problem when all the stages they fall back uh, uh, uncontrolled at once. Then of course you cannot that plan gets disrupted, and it enters into the Earth orbit uncontrollably, and it creates destruction. Okay, so most of the rocket parts land in oceans, because of course oceans are form the largest part of Earth's ecosystem. But there are certain situations when it also lands on the terrestrial ecosystems, and it creates destruction for humankind. So for example, China's Long March 5B rockets, they fell in the last 2 years in Indonesia, Peru, India, Ivory Coast, among other regions. Even ISRO's Reset 2 satellite made an uncontrolled re-entry into the Indian Ocean region near Jakarta. So that's why there is danger that even human casualties could also happen on the ground. So that's why they want a multilateral agreement regarding the same. If Just imagine if this re-entering stages they still hold fuel, then of course there is a possibility that terrestrial chemical contamination can also happen. Okay, so currently there are no international binding agreements, and there is just liability convention of 1972, which only talks about paying for damages but not how to prevent them. Okay, that's why these experts are saying that we must sign a multilateral arrangement for the same. So the next topic is share buyback. This topic is important for your economy section. So Securities and Exchange Board of India has announced that they want to gradually phase out the stock exchange buyback route and instead focus on the tender offer. So what is share buyback? You have to understand that, for example, I am a company and I have gone public. 100% of my shares are trading in the stock exchange, and so what it means that almost, let's suppose that I just have 100 shares, and 100 shares
shares are held by 100 people, and currently the ownership is public. But once what if I decide that I want to hold 25% stake in my company? Let's suppose I am a company and I want to hold 25% stake in my own company. And what would I would do? This listed company would buy its own shares from the stock market, convincing these shareholders to sell these stocks to the company itself. So that, let's suppose, 25% shareholding I want to retain with myself, then I would go to the stock market and I would buy these 25% shares of mine own only. Okay, there is also another way. I could launch a tender in which I open that I want to buy these 25% shares, and whoever applies to me with certain conditions would get this 25% shares bought by me. Okay, this is a more democratic option. Why? Because when you're buying from stock exchange, only the promoters or the people who are in the top management of the company, they are having an idea in advance that this company is going to make a share buyback in, let's suppose, on this particular day or in this particular month. Then they could benefit it from this particular offer by telling their relatives, also called the insider trading. So that's why stock exchange route has certain limitations. But Keki Ministry Committee's recommendation to the SEBI has said that there is a possibility that only one shareholder's entire trade from the stock exchange is bought by the company, and it could lead to favoritism. So instead of that, let us focus on the tender route, in which the company would open the tender and anyone who wants to sell their share to the company could do so. Because in this tender there is an option that there must be some certain reservation for small shareholders also. So basically it is a more democratic process than share buyback from stock exchange. It is also a fair and equitable method to buy back the shares of a company. So that's why SEBI is recommending this. So the next topic is one rank, one pension. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has recently approved revision of pension of armed forces personnel or pensioners under one rank, one pension with the effect from 1st of July 2019. So now the new date for one rank, one pension has been fixed from 2018. So what it means, that people who retired in 2018, whatever pension they were getting at whatever rank, it will be made applicable to all the previous retirees also. Earlier, this date was 2013, and all those who retired in July of 2014 were eligible for it. So, ex-servicemen used to get pensions as per the Pay Commission's recommendations at a time when they had retired, and there was a provision in one rank, one pension that refixation of pension after every 5 years would be done. So that's why after 2013, the next fifth year is 2018, which has been now decided. So this one rank one pension is based on the recommendation of Koshyari committee, which was a 10-member all parliamentary panel formed under the chairpersonship of Bhagat Singh Koshyari, who is also the governor of Maharashtra today. So the next topic is high efficiency solar PV modules. This topic is important for our economy section. Government of India has recently decided that PLI scheme benefits would be made or given to national program on high efficiency solar PV modules. So the government wants to build an ecosystem for manufacturing of high efficiency solar PV modules in India. This program will be implemented by Ministry of New and Renewable Energy, and under this program, government would provide an outlay of 19,500 crores for achieving manufacturing capacity. The scheme benefits would be dispersed for 5 years, and it will generate not just employment but also reduce the import dependence of our country on the area of renewable energy. So the next topic is Griha initiative. This topic is also important for your environment section. So UIDAI headquarters in New Delhi has been selected for the Griha Exemplary Performance Award for 2022 because UIDAI is harnessing solar power in its headquarters. It is recycling and reusing water. It is also engaged in sustainable waste management practices. So that's why it's
headquarter has received this particular award. So what is GRIHA? So Green Rating for Integrated Habitat Assessment is the national rating system of India for any completed building reconstruction. Construction. So this was jointly set by TERI and Ministry of New and Renewable Energy, and the objective is to help design green buildings and also evaluate the greenness of any building. So certain parameters are used in such ratings which are mentioned here. So the next topic is TULIP. This topic is important for governance section. So Ministry of Housing and Urban Affairs has confirmed that more than 5,000 uh, uh, internships have been offered under TULIP scheme. So TULIP is a program for providing in citizen internship opportunities to fresh graduates in all urban local bodies and smart cities across the country. And Ministry of Housing and Urban Affairs, in collaboration with Ministry of Education, All India Council of Technical Education, has developed this program. And this program duration ranges from 8 weeks to 1 year. And what are the benefits of TULIP? Of course, it helps the interns because they learn by doing so, and they get their employability is enhanced. It also gives exposure to these interns in large number of areas. It also strengthens the institutional capacity of the urban ecosystem, because skilled, high quality workforce and innovative citizen centric solutions are provided by these youth, and urban governance is facilitated. So the next topic is gel bots. This topic is important for your science and tech section. So gel bots, John Hopkins University scientists have built a soft robot named gel bots. These are made of gelatin, the soft jelly gel-like material, and because they are gel-like, they do not require any extra power source, and they can move without due to its shape, dimensions, and patterns of gel, and it can be created by 3D printing, because it responds to the temperature, because gels swell or shrink in response to temperature. They can be used to this property can be used to move robots, and they can be used in creating smart structures, delivering targeted medicine to the human body. It can also be deployed as marine robots to patrol and monitor ocean surface, and in case of any variation in human biomarkers and biochemical markers, they can be trained to crawl. Okay, so the next topic is getting India to net zero report. This topic is important for your environment section. So getting India to net zero report has been prepared by a high level policy commission on getting Asia to net zero. This was constituted by Asia Society Policy Institute of New, which is a New York based think tank, and this report contains new research and modeling and recommendations regarding how India can make a clean energy transition. This is the first report of this commission, and it says that if India ends new coal as soon as possible by 2023, then it can and if also transitions from unabated coal power by 2040, it would be particularly impactful for India to get to net zero emissions sooner. If India reaches net zero by 2050, then it could boost its annual GDP by as much as 7.3%. If India reaches net zero by 2070, then it would invite $10.1 trillion economy-wide investments from now, and if it reaches net zero by 2050, it would invite $13.5 trillion of investments from now. So the next topic is Indian knowledge system. This topic is important for your governance section. So Kerala State Higher Education Council has constituted a committee to formulate an expert opinion over UGC's draft guidelines for faculty training on Indian knowledge systems. So don't confuse Indian knowledge systems just in the case of medicine, but it encompasses also the arts and literature, agriculture, basic sciences, engineering, technology. All kinds of solutions are available in Indian knowledge system. So to promote that interdisciplinary research, an innovation cell, also called the IKS division, has been formed under the Ministry of Education to promote interdisciplinary research in such sectors. So this division would, of course, facilitate and coordinate IKS based inter and transdisciplinary work. It will also establish subject-wise interdisciplinary research groups. It will also popularize the schemes related to it, and it also would also facilitate funding for such projects. So the next topic is National Farmers Day. This topic is important for your prelims section rather. So National Farmers Day is observed on 23rd December each year to commemorate the birth anniversary of 5th Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh.
And in 2001, the government decided that Kisan Divas would be celebrated on Charan Singh's birth anniversary. And on this very day, awareness campaigns are made and drives are organized across the country to educate people about the role of farmers and their contribution to the economy. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.